Hello everyone and welcome to the Commerce Element. In the current session, we will be discussing about meaning and preparation of profit and loss appropriation account with the help of a very basic, simple numerical example. So come, let's proceed. Now what is profit and loss appropriation account? It is just an extension of profit and loss account. आप कह सकते हो profit and loss account का एक pro version है. इस प्रो वर्जन वाले अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? We will be recording all incomes and expenses that are related to partners of the firm. There are certain expenses जो firm partners को पे करता है. Like partners firm को capital देंगे, firm उस capital के amount पे partners को interest देगा. So interest on capital firm has to pay and it has to pay to the partner. So interest on capital पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंस हुआ. सेम वे पार्टनर्स जो भी कुछ अमाउंट फर्म में से विड्रॉ करेंगे, फर्म उन ड्रॉइंग के अमाउंट्स पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा. सो फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रिसीव करेगा. सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के व्यू पॉइंट से इनकम है जो फर्म को पार्टनर से मिलती है, एंड thus इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज कॉल्ड पार्टनर रिलेटेड इनकम. So ऐसे कुछ incomes and expenses है which are related to partners of the firm, and those incomes and expenses जिस account में record होते हैं that account is profit and loss appropriation account. This account will be nominal in nature, that is all the expenses will get debited, all the incomes will get credited. Once आपने सारे firm के expenses debit कर दिए जो firm partner को pay करता है, सारे फर्म्स के इनकम्स को क्रेडिट कर दिया जो फर्म पार्टनर से रिसीव करता है. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो भी रिजल्ट आएगा, दैट रिजल्ट विल बी ईदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस, एंड thus you will be preparing one new set of account as per your current year syllabus, which is profit and loss appropriation account. जनरली आपको पेपर में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए 6 मार्क का क्वेश्चन आता है. आई हैव सम वेरी बेसिक सिंपल इंफॉर्मेशन based on which we will try to prepare profit and loss appropriation account. Every time in every next sum I'll take you one level higher, so that if you start understanding from such basic thing, जब next higher step में जाओगे it will be easy to grasp. So let's try to prepare profit and loss appropriation account based on this information. So the format of profit and loss appropriation account will be same as your profit and loss account. This is its credit side and this is its debit side. Now the information given to us is A and B are partners of the firm with capital 7,000 and 3,000 respectively. Interest on capital at the rate of 10% per annum. फर्म उनके कैपिटल पे उनको 10% पर annum के हिसाब से इंटरेस्ट देगा. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स A का 300, B का 200. फर्म उनके ड्रॉइंग से 300 एंड 200 उनसे इंटरेस्ट लेगा. सैलरी टू ए 300 बिकॉज मे बी ए इज अ वर्किंग पार्टनर, उससे फर्म सैलरी 300 रुपीज देगा. कमीशन टू बी 200, बी ने कोई सेल्स का काम संभाला होगा तो फर्म उसको 200 रुपीज कमीशन देगा. रेम्यूनरेशन ए को 400 एंड बी को 100 रुपीज मिलने वाला है. ट्रांसफर 500 टू जनरल रिजर्व, हमको कुछ अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है. सारा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना. सो दैट इज दे हैव सेड दैट 500 रुपीज जनरल रिजर्व नाम के पिगी बैंक में कलेक्ट करो, सो दैट इन फ्यूचर अगर कोई जरूरत पड़ी तो यू कैन यूटिलाइज द अमाउंट. नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 7,000 which is before rent to A 100 rupees, interest on B's loan 200 and manager's commission 200.
नाउ आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट चाहिए। यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया तो है 7,000, but it is said that this 7,000 is before making some adjustments. So based on this very simple numerical information, we will prepare profit and loss appropriation account. Now before you start making entries in any account, any sum, any time, make sure that आपने account का title लिखा है. So first ensure title is written, and then if you are preparing profit and loss appropriation account, start with the net profit of the year given. In our case, net profit is 7,000. So नेट प्रॉफिट 7,000। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट नेट प्रॉफिट रहा होगा तो वो रिजल्ट, वो गैप आपको पीएनएल अकाउंट के डेबिट में मिला होगा। पीएनएल के डेबिट से वी विल क्रॉस एंटर इनटू पीएनएल एपीटीज क्रेडिट साइड। नाउ यू मे बी हैविंग क्वेश्चन दैट व्हाई आई हैव रिटर्न दिस 7,000 net profit in the inner column, because the information says that this net profit is before certain adjustments. So if your net profit is before R, I and M concept which is given in the question, we will have to adjust these things in the net profit and then arrive at final amount of net profit. Let's see how it works. R for rent to A is a partner. I for interest on B's loan, again B is a partner, and M for manager's commission. Now it is say that rent to A is 100 rupees, interest on B's loan is 200 and manager's commission is 200. So that is R, I and M. We'll start with I first. Interest on B's loan. See, in previous session when we discussed theory, we discussed that if B, a partner, is giving any amount to the firm as loan, he is considering himself in capacity of an outsider. Because firm को loan outsider दे रहा है, B खुद को outsider की capacity में रख के firm को loan दे रहा है, तो B का interest on loan should also be treated as an expense paid to outsider. Because it is treated as an expense paid to outsider, इसका recording होना तो चाहिए था P&L account में, but because आपको बोला है कि this profit is before interest on B's loan, तो फिर हमको B की लोन का इंटरेस्ट 200 रुपीज ये प्रॉफिट में से डिडक्ट करना होगा। बिकॉज अगर वहां पे पीएनएल में रिकॉर्ड हुआ होता तो पीएनएल का प्रॉफिट 7,000 के बदले 200 कम आता। सेम फंडा के बेसिस पे रेंट टू ए 100। सपोज ए इज अगेन अ पार्टनर जिसने पार्टनरशिप फर्म को अपना शॉप यूज करने दिया, बिकॉज फर्म उसके शॉप पे चल रहा है, फर्म से वो 100 रुपीज रेंट ले रहा है। नाउ अगर पार्टनर ए फर्म से 100 रुपीज रेंट ले रहा है तो ए इज कंसिडरिंग हिमसेल्फ इन कैपेसिटी ऑफ अ लैंडलॉर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर शॉप। लैंडलॉर्ड एक आउटसाइडर हुआ एंड दैट इज व्हाई उसको जो भी आप रेंट पे करते हो, भले वो पार्टनर को पे कर रहे हो, बट पार्टनर ने जब फर्म से रेंट वसूल किया उसने खुद को लैंडलॉर्ड समझा, तो फिर ऑब्वियसली फर्म जब उसको रेंट पे करेगा फर्म भी उसको लैंडलॉर्ड समझ के रेंट पे करेगा। सो दिस रेंट शुड हैव गॉट एंटर्ड इन पीएनएल अकाउंट, बट बिकॉज आपको बोला है कि दिस 7,000 इज बिफोर रेंट टू ए, आपको ए का रेंट 100 रुपीज यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। एंड फाइनली मैनेजर्स कमीशन 200। द मैनेजर एनीवेज आउटसाइडर है, कोई भी आउटसाइडर को जब आप एक्सपेंस पे करते हो देन दैट एक्सपेंस शुड गेट रिकॉर्डेड इन पीएनएल अकाउंट,
बट अगेन बिकॉज आपको 7,000 प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन दिया है, उसका 200 कमीशन भी हम इसमें से डिडक्ट करेंगे and you will finally arrive at the correct amount of net profit, which is 6,500. So remember that if your question says that whatever is the P&L account's net profit is before this three item, yeah, any of the three item, then any of three item में से कुछ भी information दी है, then those items amounts will get deducted. ए का रेंट क्यों डिडक्ट होगा? बिकॉज यहाँ पे ए ने फर्म से रेंट लिया अपने आप को आउटसाइडर, अपने आप को लैंडलॉर्ड समझ के, आउटसाइडर के टुवर्ड्स जो भी आप एक्सपेंस पे करते हो दैट इज टू बी रिकॉर्डेड इन पीएनएल अकाउंट. सो पीएनएल में होता तो पीएनएल का प्रॉफिट 100 रुपीज से कम होता. पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं किया तो हम अभी उसको 100 रुपीज से पीएनएल के प्रॉफिट को रिड्यूस कर देंगे. Interest on B's loan, again B ने firm को लोन दिया considering himself in capacity of an outsider, of a lender. Because B ने खुद को lender समझा, outsider समझा, उसको जो भी interest pay करेंगे that also we will consider as an expense paid to outsider. जिसका recording P&L में होना तो चाहिए था, but ये जो profit आपको दिया है that is before that interest. सो इंटरेस्ट को भी हम प्रॉफिट में से हटा देंगे. अगेन ये जो प्रॉफिट दिया है दैट इज बिफोर मैनेजर्स कमीशन. मैनेजर एनीवेज आउटसाइडर है, उसका कमीशन शुड हैव गॉट रिकॉर्डेड इन पीएनएल अकाउंट, बट बिकॉज अगेन द क्वेश्चन सेज दैट दिस नेट प्रॉफिट इज बिफोर मैनेजर्स कमीशन, हम मैनेजर के कमीशन को भी हटा देंगे. एंड thus अगर ये तीन एक्सपेंसेस पीएनएल में रिकॉर्ड होते तो पीएनएल का नेट प्रॉफिट 6,500 आता, जो हम इनर कॉलम में 7,000 को लिख के एनीवेज वी अराइव्ड एट 6,500 फाइनल अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट. Once you have entered net profit, then go with the flow of adjustments given. It is say that interest on capital is to be taken, is to be considered at the rate of 10% per annum. As I told you that firm partner को interest on capital देगा. So for firm, interest on capital is an expense, and because P&L APP account is nominal in nature, we will debit all the expenses. So as of that, to interest on capital A and B. 10% of 7,000, 10% of 3,000, because 7 and 3,000 are their capitals. So 10% of 7,000, 700 and 10% of 3,000, 300. A total of 1,000 rupees interest on capital. Interest on drawing A से 300 and B से 200 लेना है. फर्म उससे interest on drawing लेगा. So interest on drawing from firm's viewpoint is an income. Because it is an income, it should be recorded on credit of profit and loss appropriation account. So interest on drawings A and B हमको डायरेक्टली अमाउंट दे दिए हैं 300 and 200. So a total of 500. So we are done with this as well. Now salary to A 300. A में भी वर्किंग पार्टनर रहा होगा तो उसने 300 रुपीज पर ईयर की सैलरी डिमांड करी, तो फर्म उसको सैलरी पे करेगा. सो इट इज फर्म्स एक्सपेंस एंड thus we will simply write salary to A and 300 rupees. So we are done with this also. Commission to B 200. B को फर्म 200 रुपीज का कमीशन देगा. सो B को कमीशन देना फर्म के व्यू पॉइंट से एक्सपेंस है. सो अगेन इट विल गेट डेबिटेड कमीशन टू B 200. नाउ फर्म A एंड B को 400 and 100 रुपीज रिस्पेक्टिवली रेम्यूनरेशन दे रहा है. अगेन रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स इज फर्म्स एक्सपेंस. सो
रेम्यूनरेशन A and B. फर्म A को 400 and B को 300 कमीशन दे रहा है, 100 कमीशन दे रहा है, a total of 500. And firm is supposed to transfer 500 rupees to general reserve. Now जो भी प्रॉफिट आएगा पार्टनर्स अपने आप में बांट नहीं लेंगे, प्रॉफिट से पूरे प्रॉफिट के अमाउंट से पार्टी नहीं करेंगे, बट 500 रुपीज जनरल रिजर्व नाम के पिगी बैंक में रख के अलग से साइड कर देंगे. एंड thus any amount transferred to general reserve will get debited to profit and loss appropriation account as transfer to general reserve 500. Now whatever adjustments were given, we are done with all. So finally we will close the account. This side it is 7,000. Bring that 7,000 here, and you have 1,000, 1,500, 2,000 and 2,500. So your gap will be 4,500. Now this 4,500 gap is distributive profit. This distributive profit is to be distributed among both the partners. अब किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो तो कहीं पे इंफॉर्मेशन नहीं दी. So in the previous theory session we learned that if P&L distribution ratio is not given, then the profits or the losses will get distributed equally among the partners. And thus because हमको कोई P&L की इंफॉर्मेशन नहीं दी, we will distribute this 4,500 equally among A and B. So it will be transferred to either partners capital or partners current account, A and B. 4,500 को हम equal डिवाइड कर देंगे. It will be 2,250, 2,250. Like that, this 4,500 got distributed and your profit and loss appropriation account gets closed. Now why I have written capital and current account over here, that we will discuss in the upcoming session. I hope the preparation of this profit and loss appropriation account is clear. Now you can have max these many things to be recorded in your profit and loss appropriation account. Information ऐसी होगी, but with some twists the information will come. So as I told you, as we move to the further sessions, we will dive a bit deeper into this kind of information with some twists also. So Filal, I hope this is clear, and in the next session, based on this profit and loss appropriation account only, we will learn how the information, how these all entries will be made in partners capital account. Till then, stay tuned and goodbye.